punctuate करे to know the things. A language has both a written and oral aspects. Our language रो written structure थिबो और oral aspect मध्य रही थिबो. The 1951 census shows that a total of 845 languages and dialects are spoken in English. भारत वर्ष रे 845 language कथा हो जे बेले किए कहिथिले 1951 मसिया रे language कोन. Famous linguistic George Grierson, in his Linguistic Survey of India, writes that there are 179 languages and 544 dialects in India. Majority of which, again, dialect माने भाषार उपभाषा. जेमति मु कहिबी या रे एक्सपर्ट हेले ओडिया भाषा कहि परिले ओडिया रो पार्ट ले भाषा हला कोन संबलपुरी ओडिया रो गोटे पार्ट जगह जे होनी किंतु ओडिया हला कोन रेकमेंडेबल हला. Next students, majority of which are spoken only in North India. According to according to 1971 census, there are 1652. 8 monorative data guda. 1951 census shows that a total of 845 languages and dialects are spoken in India. 845 भाषा में कथा बार्ता हुई. Our famous linguistic फिले किए George Grierson. In his Linguistic Survey of India, writes that 179 total कितना language? 150 भाषा. अच्छा and कितना थिला dialects? 544. 544. अच्छा majority of which are spoken in northern India. Then the North India रे भाषा गुड़ा बेसिक हो जाए. According to 1971 census, there are 1652 languages and dialects in India. 1971 मसीहा सेंसस अनुଯାयी 1652 भाषा रही. But it was believed that more than 2000 languages and dialects are used in this country. A country रे 2000 भले languages use हुए. Out of this large variety of languages, very few are spoken by poor people, where as many of them are spoken by few. बहुत क्वचित जगह रे क्वचित भाषा मध्ये कुआ जाई थाए. The Constitution of India in its 8th schedule, भारत संविधान रो 8म अनुच्छेद कोन 8म अनुच्छेद मन 8th schedule. भारत संविधान रो 8th schedule रे 8म अनुच्छेद रे लिखा जाई छि का बाबद रे लैंग्वेज बाबद रे. The in its 8th schedule recognizes 22 languages. कितना भाषा? The language map of India can be well understood from the present organization of states. The Official Language Act. Official Language Act केबे पास हैला? 1963. 1963. ठीक मो से करेस्पोंड करिवो मनीषा. फटाफट नोट करवा. हैला. इते रोज घरटा प्रबल हेला नाम 11टा बाट बेला आसी परनी. नबा मते बहुत बादुची. करी होनी बा नहीं तबरे गोटे कोन बी जो फराड हो जे मते विश्वास कर म भुवनेश्वर क्लास ले आसला पर भारी कष्ट होची पड़े. सर हम 3 दिन के बीच एग्जाम दे प्रॉब्लम आपने दिया दिन सोई छु पूरा मतलब खरा रे जो रोल करते देखो पिले तल हमर टोटली मन रख लैंग्वेज का रहला 8 शेड्यूल रे केतरा लैंग्वेज की रिकमेंडेशन गला 22 टा 22 लैंग्वेजेस. The language map of India can be well understood from the present organization of states. सब राष्ट्र मानक में ऑर्गेनाइज करे रखि जे एवं the Official Language Act पास हला केबे 1963 declared Hindi as the official language of India. हिंदी की official language रूप में कंसीडर करा. But serious riots broke out in non-Hindi speaking states as a result. English was written as an associate language as long as the non-Hindi speaking people wanted it. बहुत लोक माने कहले इंग्लिश टा कुआ जाऊ किछि लोक माने कहले हिंदी कुआ जाऊ. सेति पे हमर साउथ इंडियन माने इंग्लिश ऊपर बहुत फोकस बहुत भल बहुत इंग्लिश नॉलेज ना करे. और नॉर्थ रे जो माने रहले से माने का ऊपर फोकस करले हिंदी ऊपर. सेति पे साउथ और नॉर्थ भितर बेले बेले कॉन्फ्लिक्ट. अच्छा पिले to solve this problem three language formula was introduced. However,
The multiplicity of Indian languages may be grouped into 4 different speech or linguistic families which are mentioned. ଆମର ଚାରିଟା linguistic family ରହିଲା ସେ linguistic family କଣ କଣ Indo-Aryan linguistic family, Dravidian linguistic family, Austric linguistic family, Sino-Tibetan linguistic ये चारिटा जांक linguistic family की बेस करी हम language को divide करा जायछि ए फर्स्ट चैप्टर टे केमति ठाकुर ने का समझाउछि in undivided India at about 73% of the people spoke in the Indo-Aryan languages 20% spoke in the Dravidian languages मन रखिबो Indo-Aryan language के कहले 73% अच्छा 20% spoke in Dravidian languages 1.3% spoke in Austric languages but only 85% spoke in Sino-Tibetan. Their number is now increasing. There has been continuous interaction among these linguistic families. ये linguistic family भितर वर्तमान कौन है ना interaction में होती है. Indo-Aryan linguistic family देखो Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, and Urdu language came under the Indo-Aryan linguistic family. Of all the languages belonging to this linguistic family, Hindi is the most important. साधारणतः हिंदी के हमें important language बोले कहूँ. Our constitution recognizes Hindi as the languages. In 1963, it is declared as the official language. 1963 मसीह रे हिंदी की official language हिसाब रे declare करा गला. So Hindi along with its allied languages like Hindustani, Urdu, Punjabi is claimed to be the mother tongue of more than 50% of India's population. People living in the Indo-Gangetic plains in northern India speak in Hindi in one form or the other. Hindi developed from a local dialect spoken in eastern UP. It borrowed from Sanskrit and used Devanagari as its script. ଆମର ମନେ ତ ହିନ୍ଦୀରେ କୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଇଛି ଦେବନାଗରୀ ହିନ୍ଦୀରେ କୋଉଟା ହେଲା ଦେବନାଗରୀ. So Hindi and Urdu together known as Hindustani till 1947 1947 मसीहा पर्यंत हिंदी आउ हमर उर्दू को हमें कहउतले कोन हिंदुस्तानी both are similar in their spoken form and greatly differ in their written form. पहिला बेल को हिंदी उर्दू एका लागिबो तो लेखिला बेल को डिफरेंट रहउ. Urdu developed from different dialects spoken near Delhi. It is the language of Mughal rulers. इधर को माने यूज करते ले मुगल नहीं सॉरी हाँ उर्दू टाको नहीं उर्दू डेवलप्ड फ्रॉम डिफरेंट डायलेक्ट्स स्पोकन नियर दिल्ली. इट इज द लैंग्वेज ऑफ मुगल रूलर. मुगल जो रूलर थिले अकबर शाहजहां बाबर एमान सब कोन कर दिले उर्दू भाषा रे कथा. Urdu borrowed many words from Persian and adopted Persian scripts as its own. Punjabi language is the Sikh community. Punjabi को मानकर language Sikh मानकर और से को स्क्रिप्ट रो borrowed करे जाई छी गुरुमुखी. देखो गुरुमुखी is as its script it resembles Hindi as its spoken form. पहिला को हिंदी भाषा रे मध्ये पंजाबी माने किछि कथा है. तापर पिला Dravidian linguistic family देखो mainly the four southern states languages namely Kannada, Malayalam, Tamil and Telugu are come under the Dravidian linguistic family. Kannada is the language spoken by the people of Karnataka who constitute more than 5% of our population. Population of 5% is what. Malayalam is the language spoken by the people of Kerala who form at about 5% of our population. Tamil is the mother tongue of the people of Tamil Nadu who constitute at about 9% of our population. Telugu is the language of the people of Andhra Pradesh who constitute more than 10% of our population. It is the second largest linguistic group in India next to Hindi. तेणु द्राविडियन लिंग्विस्टिक फैमिली रे जो गुडा रहिला विशेष करी द्राविडियन लिंग्विस्टिक फैमिली रे के रहिला पायल को गुडा रहिले कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगु. देखो ए गुटे जिंस तमे देखो गुटे धरिबो पेंसिल के कलर पेंसिल रखि दिबो ले अंडरलाइन करके जीवो तापर मते पचले मु कोन करे नोट बुझे जे नोट टका जा जीवो आउतरे कोन करे क्वेश्चन आंसर बुझे तापर आउ किछि एटा ग्रामर नु जे कष्ट तू रीडिंग करिया पड़े बस ना. Malayalam is the language spoken by the people of Kerala. Sorry, Kannada charita rahila amara language Kannada, Malayalam, Tamil. Kannada is the language spoken by the people of Karnataka who constitute more than 5% of our population.
Malayalam is the language spoken by the people of Kerala who form at about 5% of our population. Tamil is the mother tongue of the people of Tamil Nadu who constitute at about 9% of our population. Telugu is the language of the people of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh language is Telugu, who constitute more than 10% of our population. It is the second largest linguistic group in India next. Second largest consider. But ostrich linguistic family. को चारिटा हला टोटली लिंग्विस्टिक फैमिली चारिटा आर स्पेलिंग ओडिया इंग्लिश सेम किंतु एया ओडिया रे जाको कहउछ इंग्लिश रे तर स्पेलिंग ओडिया को ओडिया रे लिखबा इंग्लिश को इंग्लिश रे लिखबा प्रथम हला इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक फैमिली को भाषा रहिला ऊपर लाइन रे ऑलरेडी लिखा है जाय आसामीज बेंगली गुजराती हिंदी कश्मीरी मराठी ओडिया पंजाबी संस्कृत एंड उर्दू तमर क्वेश्चन आसीबो ओडिशा बा ओडिया को लिंग्विस्टिक फैमिली रो कोन इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक फैमिली मनोछि मा द्रविडियन लिंग्विस्टिक फैमिली रो के कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगु ऑस्ट्रिक लिंग्विस्टिक फैमिली रो के एमनसिबल ट्राइबल ग्रुप इट मेनली इनक्लूड द लैंग्वेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन majority of languages and dialects spoken by the tribals of central India belong to this linguistic family. Austric linguistic family रो कोड जांदी central India रे पिले तमे सब कथा जानथो जो ट्राइबल पीपल को भेटलोनी आदिवासी लोक को भाषा तमे सुनतो बेन तो अनेक कथा जो माने आसुना दे महू नब महू महू बिकुना दी 20 टका दबो से 20 टका देबो तुम 40 टका दे देने नेबे आ जेमिटिया नोट देखे देबो से नोट से चिन्ह देबे नेबे 500 टका नोट देले भी नेबे नहीं हमें ये नोट न बुनी 20 टका दियो तो ये लोग एमती भी समाज रे आउ बिले द Sino Tibetan linguistic family this also include tribal languages most of the languages of and dialects spoken by the tribals of central India belong to Sino Tibetan language पिले हां तमे एटी देखिथिबो हमर Sino Tibetan कोन हुए ना बेले बेले तिब्बत जानिथिबो हिमालयर पाद देश रे गोटे देश अछि तिब्बत जोड लागि कि रहिछि चाइना सहित तनु Sino माने चाइना रो लैंग्वेज आ तिब्बतन जेम दि जिंग पेंग चांग ए जो था दी नहीं जो ना चाइना के लोक को ना देखबे कि स्पेलिंग लिखले इंग्लिश में हजार मिस्टेक रहइबो से कोन अछंती मनीषा महापात्र ना मामुनी पंडा तब ना से ताको ना गुडा सब अलग अलग प्रकार तम लिखिला बेलको तम दांत जीव सब दरज होई जाई अच्छा देखा पिले तम ना तो पढिले लिखिबो ना पढिले तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जो माने तन करी लिटरेचर सब्जेक्ट रखंती कोन चाइनीज कल्चर रखंती +3 लेवल रे दिले बोपा से बुद्धि सिखि Sino Tibetan linguistic family pala amra majority of Indo-Aryan and 4 Dravidian languages are included in the 8th schedule of our constitution. मनरक 8 परीक्षा रे सियोर पडिबो हमर जो लैंग्वेज ता को अनुच्छेद रे अछि अष्टम अनुच्छेद 8th schedule रे केतरा लैंग्वेज हमर रहि छै 22 टा लैंग्वेज रहि सेरा मन दे सुना आ गोटे कथा करियो पिले ए जो ऊपर लाइन गुडा टिके घोसिया पडिबो Indo-Aryan किए रहिले लिंग्विस्टिक रा द्रविडियन लिंग्विस्टिक फैमिली Austric linguistic family, Sino Tibetan linguistic family. Our Sino Tibetan linguistic family, 100% of the tribal composition. Majority of India, Aryan, and 4 Dravidian languages are included in the 8th schedule of our constitution. Along with some other languages as the national or model India languages. India reorganized into different states along linguistic lines because most of these languages are localized in different parts of the country. For a country of different parts. But out urban centers are multilingual in composition. It is also object that the same language is differently spoken in the same linguistic state. पिले देखिबो हमर बेंगली भाषा को हमर संबलपुरी भाषा को प्रत्येक भाषा में कहला बेल को हमर टिके ओडिया भाषा पसिसे पाछो तार कारण कोन सब लैंग्वेज रो एसेंट सहित टिके टिके ओडिया हमर मिक्स हो So dialects of a language are also many. Thus, multilingual nature of the country continue to affect each and every aspect of our social life and possesses a serious threat to our national unity and integrity. Our desire unity and integrity ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର problem create କରିଥାଏ serious threat କରିଥାଏ अच्छा ଆମେ କାଇଁ 4 मिनट नष्ट କରିବା ट्राइबल कंपोजिशन पिले ट्राइबल एरिया जो माने रहउचंती विशेष करी आदिवासी बहुल लोक माने ट्राइबल ग्रुप्स विलेजेस एंड टाउन्स आर द इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ये भारतीय समाज रे जदी देखिबा निश्चित आदिवासी बहुल लोक रहउथिबे कारण
भारत आम भारत भितर जे देखिबा मिनिमम हमर जो ट्राइबल रहउछन्ती कोउठी जनजाति माने कोउठी रहंती वन जंगल रे पहाड़ रे तो पहाड़ अछि जंगल अछि ना जनजाति अछि tribals constitute at about 9% of the total population ଆମର ଟୋଟାଲି 100 ରେ 9 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ट्राइबल population but this vast population is heterogeneous in nature ये सब जगह समान नहीं there are about 414 tribes in India as per the scheduled tribes list modification order 1956 1956 अनुଯାयी 414 ट्राइब अछन tribe is a kinship group that constitute a society according to Piddington ए टर्म ला लिखियो मनीषा मोर सोशियोलॉजी में सेपरेट कॉपी करो Piddington a tribe is a group of people speaking a common dialect inhabiting a common territory and displaying a certain homogeneity in their culture हमर समस्तकर संस्कृति आज होची प्रभु श्री राम को जन्म दिवस हम हिंदू मानक पे एटा गोटिए कल्चर समस्त हिंदू माने पूजा करते ना नहीं सो tribes have a strong sense of distinctiveness and separate themselves from non-tribals language is one of the strong traits by which they identify themselves language ro bhasha ru jana padita however the numbers of a tribal population of India are classified into different classes or groups on a different basis such as geographical location language race and socio-economic development socio-economic development जो tribal population होता है होता है classification of tribes on the basis of geographical location tribal मान के हम तमे classify करिबा geographical location is one of the important basic classifying the tribes generally Indian tribes are divided तीनटा जोन कथा कहिछि किंतु चारिटा दैछि फर्स्ट ले नॉर्थ ईस्टर्न जोन जो माने रहले दिस जोन इंक्लूड द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ ईस्टर्न कश्मीर ट्राइबल पॉपुलेशन ईस्टर्न पंजाब हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश आसाम बंगाल नागालैंड एंड बिहार यही जगह एक ट्राइबल पॉपुलेशन रोन इट्स आउटपोस्ट शिमला एंड ले इन द वेस्ट Lisai hills and the Mishnitaks in the east, the Akka, the Tulikata, the Mishni, the Naka are some of the tribes of this one. वो कौन है? एक पांच चक्र ट्राइबल मान को मन रखिए होशियार बोली। अब कौन सी है? देखो, अब यदि ये धंधा करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी, ये बढ़िया पट्टा मन रह जाता। The middle or the central zone. This does include the tribal population in southern Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, Odisha, MP, Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra. Majority of the Indian tribal population lives in this zone. It is one of the majority of Indian population. Tribal, the Baiga, the Bhil, the Gond, the Khond, the Muria, the Sabara are only a few among the large variety of tribes of this world. ये जो नोटो ट्राइबल मन रहले ए डाला नंबर ए गला पिले एतिक थाउ मनीषा आ पढिबा मार्क कर देता कौन बोलबा कौन लो पहिला तो कौन पाठ पढा लागरे किछि भय करबो सर मो एटा जानि मु जानि करते ओडिया नोट देला परे कोन हेल्प आउटर हैला ना ओडिया रे जब नोट कर दबा आउटर रे बुझानो तापर टेस्ट तेणु मो कथा माने